Hello and welcome everyone. My name is Sneha. In today's class, we are going to start a new chapter that is Nutrition in Animals of class 7th. So let's get started with the chapter. First of all, in this chapter, we are going to learn about, why do we need food, or if we are having any food, how exactly the food is getting breakdown in our body, and what all organs, or we can say that different parts of our body which are involved in this process of breakdown of the food, which we call digestion. So we are going to study about all these things later in the chapter. So let's answer the basic question, which is here on my screen. Why do we need food? So we know that we need food for growth. We need food for repairment of our tissues, right? All the tissues and cells, they need some source of energy for their growth, for their repair, and also we need food for the functioning of the body, right? Okay, now that we have understood why do we need food, let's understand what exactly is nutrition. If I say nutrition in animals, then what exactly is nutrition? So we know that nutrition means nutrient requirement, mode of intake of the food, and its utilization in the body, right? If we are having any food, or we can say that nutrient, how exactly we are take it in usko hum mode mein ginte hain, and then after intake of the food or the nutrient, how exactly that nutrient, or we can say that the food is getting utilized in the body. Understood? So now that we have understood why do we need food, what exactly is nutrition, now let's see how exactly this process is taking place in humans, right? Okay, so we call this process as digestion in humans. So the food components pass through a continuous canal, जिसको हम esophagus भी कहते हैं. I'm sorry. Right, so we call it also esophagus. So then the food gets digested in each compartment. Each compartment मतलब different parts होते हैं. Like we have esophagus, then we have stomach, large intestine, small intestine, we have pancreas, we have liver. All these are different compartments. We can say different parts. This is called an alimentary canal. So after the tract or the canal from mouth to anus of the human being, where the digestion and absorption of the food take place. So we know that कि जो food का digestion और absorption है वो कहाँ हो रहा है? Canal running from the mouth to anus. So हमने काफी बार एक human digestive system की diagram देखी है. You can see this. So from the mouth to the anus, this is the alimentary canal, or we can say the digestive system of human beings, right? So we'll come to this later. So now is the first step, ingestion. Okay, let's go to the diagram and then understand. Ingestion means the taking of food. So you are having any food from the mouth, or we can say that the oral cavity. So after the food, it is then sent to esophagus. Esophagus kya hai? This is the long pipe that is running in the chest cavity. So from the esophagus, the food reaches the stomach. After the stomach, it is, there in the pancreas. After that, it reaches the small intestine, and lastly to the large intestine, and then outside the body, जिसको हम feces या फिर excretory product कहते हैं in the last, right? So this was a basic idea of how exactly the digestion process is taking place in humans. Now let's discuss this in bit detail one by one. So like I told you about the first step, that is ingestion, means khana, right? Intake of food, we can say, right? Intake. Okay, so the process of taking food into the body is called ingestion. ये सबसे पहला स्टेप होता है हमारा. So after ingestion, the process by which the food containing large insoluble substances is broken down into smaller water soluble substances. So we know that हमने जो खाना लिया था, that was in a large piece. So after entering the body, or we can say that in our mouth, हमारे जो teeth होते हैं, they help in breakdown of the food into smaller parts. After that, these parts are then absorbed in the body, right? So इसी basically चीज को हम पूरे को digestion बोलते हैं, right? Absorption से लेकर breakdown से लेकर absorption तक का process. So the food is broken down into small water soluble substances, which is known as the digestion process.
सो बेसिकली इधर दो मेथड्स होते हैं. फर्स्ट फिजिकल मेथड्स, जैसा कि मैंने अभी बताया था, दांत जो हमारे हेल्प करते हैं, जिसमें राइट च्यूइंग में, ग्राइंडिंग में, ये सब कहाँ होता है? हमारे दांत में. वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, राइट? वी हैव इंसीजर्स, वी हैव कैनाइन्स, वी हैव मोलर्स, वी हैव प्रीमोलर्स. मैं इधर लिख देती हूँ एक बार. So we have incisors, we have canine, premolars and molars. So all these are different types of the teeth which are present in our buccal cavity, जो food को तोड़ने में help करते हैं, which helps in breakdown of the food into smaller pieces, right? Okay, so after the physical method मतलब जहाँ पे दांत help कर रहे हैं food को small parts में break down करने में. So after this comes the chemical method. Chemical means जहाँ पे enzymes work करते हैं, are enzymes. Okay, so in the chemical methods enzyme work करते हैं, जिसको हम बोलते हैं digestive juices या फिर digestive enzymes. So addition of digestive juices to the food by body itself. So we will discuss this in detail later in the chapter. Okay, so the next process is after the breakdown. हमने यहाँ पे breakdown कर लिया. So after that, the process by which the digested food passes through the intestinal wall into the bloodstream is called absorption. Means you can see, okay, let me just clear this out a bit for you. Okay, so yes, so now we have seen that there was a food particle which was big in size. Then with physical methods, हमने इसको small parts में तोड़ लिया. After physical methods, we know that there are chemical methods, जिसके अंदर क्या होंगे? Enzymes work करेंगे, which will break the food further into smaller pieces. After this, अब ये food जब बहुत small pieces में टूट चुका है, now the next step will be absorption, means this one, right? जब ये food बिल्कुल small pieces में टूट चुका है, after that, this food, imagine that this is the food, you know, the final physical methods or chemical methods के बाद जो food है, that is the food, and this is the blood vessel. Okay, so this food is then absorbed in the blood vessel, जिसको हम absorption कहते हैं. Okay, which is then utilized by, sent to different parts of the body and then utilized by the body. Understood? Okay, now that the food is absorbed in the body, it is then utilized, right? It is very simple. So once the food is absorbed, it is then utilized. Utilize मतलब use कर लिया जाता है. So the process by which the absorbed food is taken in the body cells and used for energy, for growth, for repair is called assimilation. Okay, these three things we have already discussed in the first slide, if you remember. हम food exactly क्यों लेते हैं? This was the answer, right? For energy, for growth, for repair, right? So in this step, जो सारा food हमारा digest हुआ, that is absorbed in the body and that is used for energy, for growth and for repair. Okay. Now the last step is egestion. Egestion सबसे simple step है. So the process by which undigested food. Okay. So हमने देखा जितना भी हमारा food था, ये blood vessel से different parts में हमने भेज दिया, जहाँ पे वो body ने use कर लिया for growth, for energy and for repair. After that, some part of the food is there which is left. And why it is left? Because it is, you know, not wanted by the body. We can say that which is unwanted. Okay, pardon me for my handwriting. Unwanted मतलब body को उसकी जरूरत नहीं है. All right. So the food which is unwanted by the body or which is undigested is remained in the body, is removed from the body, and we call it as egestion, right? Or we can say that excretion. There's another term for egestion, excretion. That is excretion. All right, this is the last and the final step of the digestion process, excretion. So large intestine plays a major role in excretion. We know that the large intestine of our body plays the major role in egestion. All right, so let's move to the next slide. I hope this part is clear to everyone. Okay, we will discuss this again a bit. So first we have discussed the first step, that is ingestion, means food ko intake, right? The intake of food. The
intake of food, that is the first step. After the intake, the food is then broken down into smaller pieces, right? जिसको हमने digestion बोला. After the digestion, the food is absorbed in the body, right? The food is absorbed in the body. Absorb कहाँ होता है? In the small intestine. After that, the food is then used by the body, जिसको हम assimilation कहते हैं. Assimilation means the food that is absorbed in the small intestine is then used by different parts of our body for the growth, for the repair, right? So the final step is excretion or egestion, जिसमें the unwanted or the undigested या unused food is left, is expelled out from the body, जिसको हम feces कहते हैं. FAECE, feces. ठीक है? Okay, so pardon me for my bad handwriting. Let's move to the next slide. Okay. All right. So अब हमने एक over idea हमें मिल चुका है what exactly is the whole process of digestion, right? जिसमें हमने पढ़ा क्या था, 5 steps थे. अब ये 5 step exactly कौन कौन से compartments में हो रहे हैं. By compartments I mean different organs or different parts of the body, right? So the first step we know that ingestion कहाँ पे होता है, mouth में, or we can say that the buccal cavity, right? All right. So after the buccal cavity we have the food pipe, that is the esophagus. Esophagus के बाद food कहाँ जाता है हमारे stomach में, जहाँ पे उस पे digestive enzymes, or we can say that digestive juices, different digestive enzymes or digestive juices उस पे work करते हैं to break the food into smaller pieces. ठीक है? After that the food reaches the small intestine, जहाँ पे क्या होता है, absorption होता है इंपॉर्टेंट चीजों का, जो हमारी बॉडी को चाहिए वो सारी चीजें अब्सॉर्ब हो जाती है और फिर वो एसिमिलेट हो जाती है, राइट? बॉडी पार्ट्स में जाती है डिफरेंट. ठीक है? सो आफ्टर द स्मॉल इंटेस्टाइन द अनयूज्ड, द अनवांटेड एंड द अनडाइजेस्टेड पार्ट इज इट गोज टू द लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ पे अगर थोड़ा बहुत पानी बचा है, थोड़ा बहुत कुछ there are some ions, or if there is anything left, is absorbed in the large intestine, और lastly anus से excrete out हो जाता है. एनस से क्या होता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है. सो वी नो दैट फूड इन कहाँ से होता है, फ्रॉम द बकल कैविटी, एंड फूड आउट कहाँ से होता है, फ्रॉम द एनस, राइट? ओके. सो हमने इधर डिफरेंट कंपार्टमेंट्स पढ़े लास्ट स्लाइड में. डिफरेंट कंपार्टमेंट्स यानी कि डिफरेंट पार्ट्स और डिफरेंट ऑर्गन्स हमारी बॉडी के, जिसने हेल्प किया था इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. बट देयर आर सम ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद ऑल दीज ऑर्गन्स, जो कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं, राइट? एंजाइम्स किस में हेल्प करते हैं, केमिकल वाले पार्ट में, राइट? हमने पढ़ा था केमिकल ब्रेकडाउन होता है और एक फिजिकल होता है. फिजिकल तो हमारा दांत हेल्प करते हैं, बट इन केमिकल ब्रेकडाउन एंजाइम्स हेल्प करते हैं. ऑल राइट. सो विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ द फूड, दीज इंक्लूड्स द सलाइवरी ग्लैंड्स which is present in the buccal cavity, liver and then pancreas. All right, so let's move. Okay, so the first one that we have is the mouth and the buccal cavity. यहाँ से क्या होता है, हमारा food in होता है body में, right? इधर से food in होता है या फिर intake होता है. We take the food through our mouth, we know that. So it is the process of taking food into the body. So we can say that ingestion is the process of taking food into the body. So we have some different, glands. Our mouth has 3 pairs of salivary glands. They secrete saliva. In later higher classes, we will, study about the different pairs of salivary glands. But in 7th class, this much information is enough for you. That we have 3 pairs of salivary glands and they secrete the saliva. The saliva acts upon the starch and break down it into sugar. Okay, so ये एक बहुत ही important चीज है समझने के लिए यहाँ पे. So the saliva acts upon the starch and break down it into sugars. So ये first चीज है जो यहाँ पे हमारे माउथ में digest हुई है. क्या digest हुआ है? Starch. Starch is digested by the saliva in the buccal cavity into sugars. Okay, so we can say that starch था, ठीक है, उस पे salivary amylase ने work किया and to break down it into sugars, right? इसको sugar में break करने के लिए. Okay, so after the mouth or the buccal cavity we have the esophagus. Esophagus क्या था? वो long pipe था जो हमारे alimentary canal में है, right, in the chest cavity.
So the esophagus is also called the food pipe. We know that it runs along the neck and the chest. The food from the mouth after swallowing passes into the esophagus and push down to the stomach. Stomach तक उसको push करते हैं, mouth से लेकर stomach तक वो food जब जाता है फूड पाइप के थ्रू, तो एक स्पेशल टाइप की मूवमेंट होती है उसके अंदर. वी कॉल दैट मूवमेंट एज पेरिस्टालसिस. We call that movement as peristalsis. This is an important term and a new term for you, peristalsis. So अगर by chance इसको define करने के पूछे जाए, so we can say that peristalsis is the special movement that is there in the esophagus which helps the food to move from the mouth to the stomach, right? All right. So the peristaltic movement take place throughout the alimentary canal which pushes the food in the downward direction, right? Mouth से stomach तक, यानी कि downward जा रहा है food, ऊपर से नीचे आ रहा है. So peristalsis उस movement में help करता है. At some times the stomach is not ready to take the food, causing vomiting, right? ऐसा होता है कई बार. The food is vomited out of the mouth. क्यों? Because the stomach is not ready to take the food. Where the food is expelled out from the esophagus to the mouth by reverse peristaltic movement. अभी हमने डिस्कस किया था पेरिस्टालसिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट किस डायरेक्शन में होती है, डाउनवर्ड में. जबकि अगर वॉमिटिंग हो रही है तो वो मतलब वो ऊपर आ रहा है फूड फ्रॉम द ईसोफेगस टू द माउथ, यानी कि रिवर्स हो रहा है. रिवर्स मतलब उल्टा. सो हियर द रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज हैपनिंग. ऑलराइट. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव द स्टमक. Okay, you can see here's a small picture of stomach. It's a J-shaped structure, right? It's a J-shaped thick-walled bag and it is the widest part of the alimentary canal. So it is an important thing that you know the widest part of the alimentary canal is the stomach. It receives food from the esophagus, right? अगर हम एक डायग्राम देखते हैं तो हमें पता है कि स्टमक के ऊपर क्या था, ईसोफेगस था. एंड स्टमक से नीचे अगर फूड कहीं जाना होगा तो कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा. ऑलराइट. सो यू कैन सी द फिगर स्टमक. ओके, नाउ द फंक्शंस ऑफ स्टमक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, बट दिस इज वेरी सिंपल, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. ओके, स्टमक की कुछ स्पेशल चीजें होती है. सबसे पहली स्पेशल चीज क्या है, म्यूकस. The next special cheese is the hydrochloric acid, or we can say that the HCl, and the third is the digestive juices. All right. So ये तीनों चीजें exactly है क्या, ठीक है. So these are some secretions. Means the stomach secretes three things. What is the first? Mucus. What is the second? Hydrochloric acid, or we can say the HCl, and the third one is digestive juices. इसको हम digestive enzymes भी बोल सकते हैं. अगर आपको कहीं बुक में डाइजेस्टिव एंजाइम लिखा दिखता है तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ऑलराइट. सो अब इन तीनों को सिक्रीट किया स्टमक में. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हमें पता हो एग्जैक्टली इनका फंक्शन क्या है, राइट. सो पहले को डिस्कस करते हैं, म्यूकस. म्यूकस क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक. यू कैन सी इन द डायग्राम. ओके, लेट मी चेंज द कलर. राइट. सो यू कैन सी दैट दिस इज द लाइनिंग ऑफ द स्टमक. ठीक है, स्टमक के अंदर हमें पता है HCl रिलीज हो रहा है. HCl इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट. सो अगर स्टमक के अंदर HCl रिलीज होगा तो वो स्टमक की इस लाइनिंग को डैमेज कर सकता है. सो टू प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक वी हैव म्यूकस. ओके, सो नाउ वी नो दैट म्यूकस क्यों होता है. ओके, सेकेंड चीज इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. HCl क्या करता है, एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है स्टमक के अंदर, सो दैट the digestive juices या digestive enzymes can perform their functions, right. And mainly protein digestion occurs in the stomach. ठीक है. Okay, all right. Okay, so now we know that mucus क्या करता है, वो stomach की lining को protect करता है. HCl क्या करता है, वो acidic medium create करता है, और also it kills the bacteria. कौन से bacteria which may have entered along with the food that we are eating, right. If there is any bacteria that is entering our body with the food, so वो बैक्टीरिया को किल करने का काम भी HCl का ही होता है. ऑल राइट. सो HCl के दो फंक्शन हो गए. सबसे पहला क्या था, एसिडिक मीडियम क्रिएट करना. दूसरा क्या था, बैक्टीरिया को किल करना, राइट. वी हैव देन डाइजेस्टिव जूसेस. डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं, वो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करते हैं. वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेस. प्रोटीन किसके अंदर टूटता है, किसी को कोई आइडिया है? You can comment down your views if you know that protein is broken down into
सिंपलर सब्सटेंसेस कौन से एग्जैक्टली वो कौन सा सिंपलर सब्सटेंसेस है जिसमें प्रोटीन टूटता है? एनीवन? ओके, सो प्रोटीन का ब्रेकडाउन किसमें होता है? अमीनो एसिड्स में। किसमें? अमीनो एसिड्स। ऑलराइट, सो अब हमें ये तीन चीजों का पता चल गया। म्यूकस क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, और डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं। लेट्स रिकैप, लेट्स डिस्कस दिस अगेन जल्दी से। म्यूकस क्या करेगा? लाइनिंग को प्रोटेक्ट करेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा? टू फंक्शंस, फर्स्ट इज बैक्टीरिया को किल एंड सेकंड इज एसिडिक मीडियम क्रिएट। थर्ड वी हैव डाइजेस्टिव जूसेस, वो क्या करेंगे? प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में ब्रेक करेंगे। ऑलराइट, let's move. After the stomach we have the small intestine, right? We can see that in the diagram. Stomach किससे connected है? ऊपर से esophagus से and नीचे से with the small intestine. So this orange part is the small intestine. ठीक है? So the small intestine is the longest part of the alimentary canal which is highly coiled. Highly coiled मतलब होता है इस तरह का स्ट्रक्चर, ऐसे 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 बहुत ज्यादा, जिसको कॉइल किया जाता है. You can see in the diagram. So ये 7.5 मीटर का कहीं से लग रहा है? नहीं ना, बट इट इज 7.5 मीटर, अप्रोक्सीमेटली 7.5, जिसको हाईली कॉइल करके इतनी छोटी सी जगह में फिट किया जाता है. सो इट सिक्रीट्स इंटेस्टाइनल जूसेस. इंटेस्टाइनल जूसेस का अगेन क्या मतलब है? कुछ एंजाइम्स होंगे, ठीक है, which it also receives bile juice from the liver and pancreatic juice from the pancreas. So ये एक बहुत ही important point है, हम समझें कि लिवर के जो जूसेस है और जो पैनक्रियास के जूसेस है वो दोनों कहाँ जाते हैं एक साथ? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके देन वर्क करते हैं, ठीक है. वी कैन सी दैट हियर इज द लिवर, रेड कलर का जो स्ट्रक्चर है दिस इज लिवर. तो लिवर से क्या सिक्रीट होता है? बाइल जूस. एंड यू कैन सी दैट दिस इज पैनक्रियास, उधर छोटा सा पीछे दिख रहा है. सो पैनक्रियास के सिक्रीशन और लिवर के सिक्रीशन दे कम टू स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है. Okay, so the function of small intestine is that it secretes some juices or we can say that some enzymes जो small intestine में digestion को complete करते हैं. Digestion of carbohydrate, digestion of protein, digestion of fats, ठीक है. So after that we have liver. Okay, liver हमने हल्का सा last slide में discuss कर लिया है कि liver की secretion, pancreas की secretion कहाँ जाती है? Small intestine में. So we can see that liver is a reddish brown gland situated on the right side in the upper part of the abdomen. ठीक है. इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी. सो वी शुड नो दैट लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी. सो लिवर का फंक्शन क्या है? इट सिक्रीट बाइल जूस which play an important role in digestion of fats. All right, but liver ने secrete क्या किया? Bile juice. But this bile juice is then stored in the gall bladder. All right. The bile juice is stored in a sac-like structure called the gall bladder. You can see that here is the gall bladder, greenish color का structure इधर बना हुआ है. So जो bile juice liver ने secrete किया, that bile juice is then stored in the gall bladder. Okay. So after the liver, we have pancreas. Pancreas is a cream-colored gland located just below the stomach. It secretes pancreatic juice, which acts upon the carbohydrate, proteins, and convert them into simpler forms. ठीक है. Here's a small question I want to ask you. प्रोटीन का डाइजेशन इससे पहले और कहाँ पे हुआ था? Anyone remembers? In the stomach, right? स्टमक के अंदर हुआ था प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट. प्रोटीन किस में ब्रेक डाउन हो गया था? स्मॉलर सब्सटेंसेस, दैट इज अमीनो एसिड्स के अंदर, राइट? ओके, सो लेट्स गेट बैक टू पैनक्रियास. सो आफ्टर दिस द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन क्या होंगे? द प्रोटीन गेट कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड, राइट? द फैट्स गेट कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. The carbohydrates get converted into simple sugars like glucose. So ये एक बहुत ही important part है इस chapter का कि हमें पता हो the fats are getting converted into fatty acids and glycerols, proteins into amino acids, carbohydrates into glucose. Right? Let's move ahead. Okay. So now that we have discussed the breakdown part. Breakdown means कॉम्प्लेक्स चीज से छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन होने वाला पार्ट जिसको हम डाइजेशन बोलते हैं. वी हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट. सो आफ्टर दिस वी हैव द अब्जॉर्प्शन पार्ट. ब्रेकडाउन के बाद क्या होगा? अब्जॉर्प्शन, राइट? सो आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड इज देन अब्सॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. सो फॉर द अब्जॉर्प्शन प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन हैज सम फाइन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, सम finger-like projection जिसको हम villi को बोलते हैं. We call it villi, which increases the surface area for the absorption.
So you can imagine like this structure, ये small intestine है, so it has some finger-like projection like this. ठीक है, upper wall में भी होगी और lower wall के अंदर भी this finger-like projection होगी. So ये finger-like projection को हम villi बोलते हैं. And what exactly is the function of villi? कि वो surface area को increase करती है for the absorption of food. Okay, this is easy, right? So after the digested food is then transported to different organs of the body through the blood vessels, right? So ये villi ने food को क्या किया, absorb किया. जितना food इससे move कर रहा है वो ये absorb कर ले रहा है. And after the absorption, the food is then, let's imagine this is the food. This food is then sent to different blood vessels. और blood vessels से different body parts में जाता है, which is then utilized by the body. All right. If you have any confusion in this part, you can comment down or you can ask me your doubts. Okay. So after this, the assimilation, the process by which the digested food that are absorbed by the walls of intestine हमने अभी discuss किया, villi ने ज़्यादा help करी थी, है ना, are carried out to different organs of the body through blood vessels. Blood vessels means different, you know, we have different blood vessels, इस तरह से veins और arteries होते हैं, to build a complex substance such as protein that is required by our body. The energy that is required by our body is obtained by breaking down of the glucose in the cells by the help of oxygen. And then lastly, the unabsorbed or the undigested, or we can say the unused food passes into the large intestine, right? So large intestine में एक बार वो आ गया तो वहाँ पे क्या होगा, वो excrete out हो जाएगा. I'm so sorry for the wrong order. I think we missed out the large intestine here. So, okay. So after the small intestine part, we come to large intestine, right? The large intestine पे आ जाते हैं. So it is the wider and the shorter than small intestine, which is approximately about 1.5 meter length. So the function of large intestine is that it absorbs water, some salts, and the undigested food that comes from the small intestine. Thus, the semi-solid waste material, जिसको हम क्या बोलते हैं, feces बोलते हैं या waste product कहते हैं, it passes into the out. Sorry, it goes out, right? The process of removal of feces, the semi-solid waste material from the rectum through anus from time to time is termed as egestion, or we can say that excretion, right? Now we have understood the whole mechanism of the process. Digestion का जो पूरा process है, we have understood. We have an idea of what exactly is digestion, right? Okay. So the next thing is, after assimilation, excretion. All right. So we'll discuss the next part of the chapter in some next class. Till then, take care, everyone. Thank you so much.